मेरा चैनल माया सुमरो और मीट माय लाइफ एडवेंचर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो ये एक पिक्चर है ओवरऑल द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द डिसेंडिंग मोटर पाथवे फ्रॉम द cerebral cortex to the skeletal muscle. Note that in this three neurons are involved. The first neuron, that means the first order neuron, has its cell body in the cerebral cortex. Now the axons of the first order neuron descends and synapse with the second order neuron. Now the second order neuron in the internuncial neuron situated in the anterior gray column of the spinal cord. The axon of the second order neuron is short and then synapse with the third order neuron. The lower motor neuron in the anterior gray column of the spinal cord. Now the axon of the third order neuron innervates the skeletal muscle through the anterior root and spinal nerve. In some instances, the axon of the first order neuron directly synapses with the third order neuron. That means in reflex arc. So this is all about the simple form of the descending motor pathway from the cerebral cortex to the muscle or skeletal muscle. इसमें 3 neurons involved होते हैं. First order neuron that synapse with the second order neuron in the anterior gray column of the spinal cord. The second order neuron is short and then synapse with the third order neuron in the anterior gray column, and then the third order neuron, the axon of the third order neuron innervates the skeletal muscle. But कुछ cases में like as in reflex arc में क्या होता है, जो first order neuron directly synapse with the third order neuron. The overall descending tract का pathway. Now we will discuss each descending pathway separately. So let's move to another descending pathway. So this is the summary of whole corticospinal tract. First of all, this tract arises from the pyramidal cells of the cerebral cortex. Fibrous nerve travel through the corona radiata, then posterior limb of the internal capsule, then cerebral peduncle, that is middle one, 3 or 5 section, then pons, then medulla oblongata, pass through the pyramids, and eventually fiber cross the midline and terminate on, and it forms the lateral corticospinal tract and anterior corticospinal tract of the spinal cord segments respectively. Or this is also the summary of the rubrospinaltract. रूब्रियो मीन्स इसके जो नर्व सेल्स हैं वो रेड न्यूक्लियस में होंगे, और रेड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, एट द लेवल ऑफ द टिगमेंट ऑफ द मिड ब्रेन, एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ द मिड ब्रेन. ठीक, उसके जो नर्व फाइबर्स हैं या एक्सोन्स हैं क्रॉस करेंगे मिड लाइन को एंड डिसेंड as rubrospinal tract through pons and then medulla oblongata and then terminate at the anterior gray column of the spinal cord. और इसका फंक्शन क्या, ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा एक्टिविटी ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स, और इट आल्सो इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स. दिस इज आल्सो द समरी ऑफ द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. इसके जो नर्व सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलस ऑफ द मिड ब्रेन. इसके जो एक्सोन से क्रॉस करेंगे मिड लाइन को, डिसेंड करेंगे क्लोज टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस. उसके बाद वो टर्मिनेट होंगे इन द इंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द अपर सर्वाइकल सेगमेंट, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई. सो दिस इज अनदर ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. इसके जो नर्व सेल्स है वो प्रेजेंट होंगे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. देखो ट्रैक्ट के नेम से पता चलता है कि इसके जो नर्व सेल्स हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होंगे. जैसे रूब्रो था तो रेड न्यूक्लियस के पास, अब ये जैसे वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है तो उसके जो नर्व सेल्स हैं वो कहाँ पर होंगे, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. इन द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा वो रिसीव करेंगे फाइबर्स इनर ईयर से थ्रू वेस्टिबुलर नर्व.
एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेरिबलम, और उसके जो एक्सोन है वो डिसेंड करेंगे इज अनक्रोस्ड थ्रू मेडुला ऑब्लिंगेटा थ्रू द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड फाइनली सिनेप्स विद न्यूरॉन जो कि प्रेजेंट होगा एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। और दिस ट्रैक का जो फंक्शन है वो बैलेंस बाय फैसिलिटेट द एक्टिविटी ऑफ द एक्सटेंसर मसल्स। उसके बाद रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है, इसके जो नर्व सेल्स हैं कहाँ पर होंगे, इन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक। और रेटिकुलर फॉर्मेशन कैसे बनेगा, बाय द सेल्स ऑफ द पोन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड द मिड ब्रेन, इन तीनों को कंबाइन करके इट फॉर्म्स द रेटिकुलर फॉर्मेशन। और उसके जो फाइबर्स है वो पास होंगे फ्रॉम द मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और एंड होगा एट द एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और it controls the activity of the motor neurons and it also influence voluntary movement and reflex activity। और इसी ट्रैक में हमारे पास स्पॉन्टेन रेटिकुलर ट्रैक्ट भी बनता है और मेडुलरी रेटिकुलर ट्रैक्ट भी बनता है। जो फाइबर स्पॉन से निकलते हैं वो अनक्रॉस होते हैं और वो बनाते हैं स्पॉन्टेन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, और जो मेडुला ऑब्लिंगेटा से फाइबर्स आते हैं वो या तो क्रॉस होते हैं या मे बी अनक्रॉस्ड एंड इट फॉर्म्स द मेडुलरी रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट। और इसका फंक्शन क्या है, इट इन्फ्लुएंस द वॉलंटरी मूवमेंट एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी, इट आल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द मोटर न्यूक्लियस।